नेचर और फीचर के बारे में पढ़े थे, तो आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडिविजुअल डिस्प्यूट के बीच में जो फर्क है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडिविजुअल डिस्प्यूट दोनों डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। तो नेचर ऑफ डिस्प्यूट इनका क्या है? इन इंडिविजुअल डिस्प्यूट, नेचर ऑफ डिस्प्यूट अराइज फ्रॉम ग्रीवियंस रेस्ड बाय ए सिंगल वर्कर concerning their employment or related matter. But in individual dispute, nature of dispute involves conflicts affecting group of workers and employers, typically in an industry or establishment. So individual dispute में वर्कर का इंडिविजुअल प्रॉब्लम मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो या कुछ और वही डिस्कस होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ग्रुप ऑफ वर्कर उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या मैटर है, उसके बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर ग्रुप को इन्वॉल्व करता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीज होता है, मल्टीपल पार्टीज ऑपोजिंग साइड में होता है। often include trade union representing workers, but in individual dispute only involves the party which are aggrieved individuals, worker and their employer. तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट में सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप का बात किया जाए तो इट टिपिकली इनिशिएटेड एंड परस्यूड बाय द इंडिविजुअल वर्कर रेजिंग द इशू, मतलब जिसका प्रॉब्लम है वही बोलेगा। बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सपोर्टर और स्पॉन्सरशिप का बात करें तो इट कैन बी सपोर्टेड बाय registered trade union or a significant number of workers, transforming it into a collective dispute. In industrial dispute, registration of union not mandatory for a dispute to be classified as an industrial dispute. मतलब जरूरी नहीं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लासिफाइड करने के लिए आपको रजिस्टर्ड यूनियन चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है नहीं, ये उनके ऊपर है। लेकिन इन इंडिविजुअल डिस्प्यूट registered trade union is not required at all. In individual disputes, scope of impact limited in scope with consequences primarily for the individual worker involved. But in industrial dispute, the scope of impact, the outcome of affects broader group of workers and often has implications for industry-wide or establishment-wide practices. In industrial dispute, resolution process typically subject to the procedure outlined in the Industrial Dispute Act, including conciliation, arbitration, and legal resources. In individual dispute, the resolution process is resolved through established workplace grievance procedure, negotiation, or legal avenues available to the individual worker. Industrial dispute का example सारे strikes, lockouts, collective bargainings, disputes related to industry-wide labor practices. But in individual dispute, the examples are issues related to an individual worker, terminating wages, promotions, or working condition. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का लीगल फ्रेमवर्क गवर्न बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और रिलेवेंट लेवल लॉ इन जुरिस्डिक्शन, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट द लीगल फ्रेमवर्क गवर्न बाय लेवल लॉज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्कप्लेस policies. The last difference is industrial dispute generally addressed collectively on behalf of group of workers with common interest, but in individual dispute primarily involve the aggrieved individual worker pursuing their specific grievance. तो यही था। अगर आपके दिमाग में कुछ घुसा इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, अगर फर्क समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल प्रेप। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।